Hello, dear students. Assalamu alaikum. I'm your chemistry teacher, Daud Tanveer Gill. So, today I will be discussing with you the MCQs of the revision worksheet of the topic covalent bonding. Let's begin the session. Okay, let's start with question number one. As you can see on your screens. So, what is basically question number one talking about? It is talking about which statement shows that graphite and diamond are the different forms of the element carbon. So स्टूडेंट्स ये पढ़ के आपके दिन में पहली बात क्या आती है कि एलोट्रोप्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एलिमेंट कार्बन बेसिकली ये एलोट्रोप्स की बात कर रहा है एलोट्रोप्स की डेफिनेशन क्या है Allotropes are the different forms of the same element having same chemical properties but different physical properties. So हम इसके accordingly सारी options को एक बार देखेंगे. Okay, option number A. Both graphite and diamond have giant molecular structures. We already know that graphite and diamond have giant molecular structures, but this is not in accordance with the definition of the allotropes. So this is incorrect. इससे ये नहीं पता चलता कि ये different forms हैं. बेशक है giant molecular structures. So we will cross the statement. B. Complete combustion of equal masses of graphite and diamond produces equal masses of carbon dioxide and no other product. This is true because they both have the same chemical properties because both are made up of carbon atoms. So on complete combustion, they will only give carbon dioxide gas. I'm writing the equation for you. So this is a correct option because it is indicating the chemical properties. In the bracket, I will write chemical property. तो ये इसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ. तो ये दिस इज राइट. लेट्स लुक एट द टू ऑप्शंस. Graphite and diamond have different melting points. No, this is incorrect. Since they are made up of carbon atoms, they have similar melting points. This is incorrect. Option number D. Graphite conducts electricity whereas diamond does not. ये तो हमें पता है कि ग्रेफाइट करता है वो नहीं करता. उसकी वजह है कि उसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. डायमंड में कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है. लेकिन ये एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है बिकॉज जैसे एक मेटल करता है नॉन मेटल नहीं करता कंडक्ट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन नॉट डिसाइड दैट दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स. इसके लिए हमें फिर दोबारा डेफिनेशन में वापस जाना पड़ेगा. केमिकल प्रॉपर्टी बेसिकली अगर सेम हो तो ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट these are a different forms. Physical properties although vary करती हैं, but this is not a deciding factor. So again, this is not a correct option. So B is the correct option for this. Right. What question number 2? What is the number of shared pair of electrons in ammonia molecule? तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें अमोनिया का डॉट एंड क्रॉस बनाना पड़ेगा. We already know that the formula of ammonia is NH3. We have discussed it several times in the class, and so I will be drawing a dot and cross structure for ammonia. All of us know that nitrogen has 5 valence electrons and it forms 3 covalent bonds with uh, hydrogen atoms. So all together we get ammonia structure, and the two go up the lone pairs of nitrogen and they form covalent bonds with hydrogen atoms in this way. अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने मुझे बताना है कि कितने नंबर ऑफ शेड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे. राइट. If you count the number of shared pair of electrons, it's 1, 2, 3. So which option has 3 in it? Yes, it's A. If you count the number of shared pairs, so there are 3. So the correct option is A. We will circle option number A while the other are incorrect. Okay, let's come to question number 3.
Which dot and cross diagram shows all the outer electrons of each atom is not correct. इनमें से कौन सी डायग्राम इनकरेक्ट कौन सी इनकरेक्ट है यानी कि नॉट करेक्ट है. तो हाइड्रोजन का अगर हम देखें तो ये सही है. इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते ही वन है. सो both are taking place in covalent bonding. So this is correct. Okay, now let's come towards option number B, HCl. अब HCl में आप देखें कि क्लोरीन के जो आउटर शेल है उनको शो नहीं किया गया. इफ यू ड्रॉ द करेक्ट स्ट्रक्चर, आई विल ड्रॉ फॉर यू द करेक्ट स्ट्रक्चर. हाइड्रोजन में जैसे देखें, we all know that it has one valence electron and chlorine has seven. So for chlorine, I will be making cross in order to differentiate the atoms. ये देखें क्रॉस में बना रहा हूँ. अब बाकी के देखें 6 जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे मैं उनको भी शो कर रहा हूँ. Yes, this is the correct structure for HCl, whereas in this option the outer shell electrons are not being shown. So yes, this seems to be the incorrect option. अब कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप देखें, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ. कार्बन डाइऑक्साइड में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं. This is oxygen atom. I will make cross for it. Look, students, as you can see, I'm showing you the outer shell electrons. Okay. So outer shell electrons option number C में भी shown है, तो C भी ठीक है. अब मीथेन में अगर आप देख लें, it has the formula of CH4. So I will also draw its structure. Carbon has 4 valence electrons, and it will make dot and cross with the hydrogen atoms like this. तो इनमें से कौन सी ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि देख लें कार्बन डाइऑक्साइड की भी करेक्ट है, मीथेन की भी करेक्ट है CH4, हाइड्रोजन की भी करेक्ट है, सिर्फ HCl की गलत है. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट. सो वी विल circle this option while the other are correct. Okay, let's come towards question number 4. Some students wrote 3 statements about the bonding in a molecule of ammonia. We have already drawn the structure of ammonia over here, so I won't be drawing it again. Okay, let's read statement number 1. A nitrogen atom has 3 outer electrons, so all outer electrons are involved in bonding. This is incorrect. It has 5 outer electrons, so this is not correct. I will simply put a cross on statement number 1. Nitrogen belongs to group 5, so it has 5 outer electrons. Let's read statement 2. Nitrogen atom has 5 outer electrons, so 2 outer electrons are not involved in bonding. So if you look at the structure of the dot and cross over here, yes, this agrees with the statement. 2 of the electrons are not involved in the covalent bonding. So yes, this is right. We'll simply put a tick before it. And statement number 3. Nitrogen atom shares electron with each of the 3 hydrogen atoms. Yes, this is also right. If you look at the dot and cross again, so there are 3 hydrogen atoms that are covalently bonded to nitrogen atom. So this is correct. So we have already, known that 2 and 3 statements are correct. So इनमें से किस option में 2 और 3 का combination available है? By looking at the options, yes, it's C. So we will go for C.
while we will eliminate the rest of the options. Okay, class. Let's come towards uh, MCQ number 5. Okay, class. MCQ number 5. The table shows some properties of four solid elements. Uh, which element could be graphite? Graphite का class जैसे कि हमने class में भी study किया है, it has good electrical conductivity. And since it is a giant molecular structure, तो इसका melting point भी high होना चाहिए. First of all हम check करेंगे कि electrical conductivity किस options की अच्छी है. So option number A and B, we'll eliminate option number C and D. So we are only left with A and B. अब ऑप्शन ए में अगर देखें मेल्टिंग पॉइंट लोअर दैट इज 97 यानी वाटर से भी कम है. दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. इट इज द जायंट मोलेकुलर स्ट्रक्चर. तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है. सो वील गो फॉर बी. बी इज द राइट ऑप्शन. दिस इज द राइट ऑप्शन. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. Diamond and graphite are two different forms of the element. They each have different uses. Which row is correct? अब क्लास डायमंड के बारे में हमने क्लास में भी पढ़ा था. डायमंड हैज अ वेरी हार्ड स्ट्रक्चर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग. ड्यू टू दिस रीजन इट कैन इवन कट ग्लास. तो हमने देखना है कि डायमंड ग्लास कट कर सकते हैं. तो ऑप्शन ए और बी रह गई है. एज एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड स्टूडेंट्स वो चीज होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है. या C3 में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें यूजली जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो ग्रेफाइट के बने होते हैं. सो दे कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर हम ए और बी में से अगर देखें, इलेक्ट्रोड के ऑप्शन बी में है. एज अ लुब्रिकेंट ग्रेफाइट, एज यू ऑल नो, हैज a layered structure. When we apply some force, these can easily slide over each other. So ये graphite की property होती है as a lubricant. So option B is correct. So we'll go for B. क्योंकि ये सारी properties इन पे फिट करती हैं. डायमंड जैसे ग्लास कट कर सकता है, ग्रेफाइट एज अ गुड इलेक्ट्रोड वर्क कर सकता है. ग्रेफाइट जो है वो लुब्रिकेंट के तौर पे काम कर सकता है. सो यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट. Okay, class, let's come towards question number 7. How many of the molecules shown contain only one covalent bond? Chlorine, H2, HCl, nitrogen, O2. For this class, you should be very quick enough to decide which of these have only one covalent bond. Anyways, I can explain this question in detail so that you have a better understanding of the question. But I will still draw for you all the structures so that you can easily understand the question. अब क्लोरीन में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दे फॉर्म वन कोवलेंट बॉन्ड. 6 are unbonded and one participates in the bonding. So they form a structure like this in the dot and cross, one covalent bond like this. Now I will draw for hydrogen. हाइड्रोजन का हमें सबको ही पता है जैसे कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है. इट विल फॉर्म वन कोवलेंट बॉन्ड लाइक दिस. Yes, and for HCl, and now we are left with nitrogen and oxygen. Nitrogen, since we all know, is lies in group number 5, and it has to gain 3 electrons, so it will form a triple covalent bond with its atom by sharing it 3 of its electron with another atom of nitrogen. So it will form a triple covalent bond with nitrogen atom like this. The two are unpaired, or you could say lone pairs. They will go up here. And oxygen forms double covalent bond.
I will draw over here. For oxygen, space is a little bit, but I'll still manage to do it. There are, 4 unpaired electrons, so they will go here. अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप देखें, अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि किन कंपाउंड्स में वन कोवलेंट बॉन्ड है। क्लोरीन जैसे आप देख सकते हैं, आई हैव ड्रॉन इट्स डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, सो दिस इज द ऑप्शन, आई एम पुटिंग अ टिक। हाइड्रोजन, यस इट हैज वन कोवलेंट बॉन्ड, HCl में वन कोवलेंट बॉन्ड, ये आप देख सकते हैं। Whereas in nitrogen there are 3 covalent bonds, triple covalent bonds, और oxygen में 2 हैं, so nitrogen and oxygen are not the options. So the correct option is HCl, hydrogen and chlorine. If you count them, तो ये 3 बनते हैं, तो 3 किस ऑप्शन में है? B. So yes, B is the correct option for this. I'll circle B for this. Okay, which substance has a giant covalent structure and contains atoms of more than one element? Okay, क्लास हमने पढ़ा था कि डायमंड तो हमें पता है कि उसका कार्बन का ही बना होता है, एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है। ग्रेफाइट में भी कार्बन होते हैं, बट दे हैव हेक्सागोनल अरेंजमेंट। बट इट इज आस्किंग आर मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। मीथेन तो एक सिंपल मोलेकुलर स्ट्रक्चर है, इट इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल। Whereas सैंड में क्लास, वी डिस्कस दैट कि सैंड में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन, इट हैज अरेंजमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ डायमंड। डायमंड का भी टेट्राहेड्रल होता है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए, ये देखें। इट इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर्स, और ये चेन एक्सटेंड होती रहती है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सैंड, दिस इज Si, सिलिकॉन SiO2, इसका एक नेटवर्क सा बनता रहता है, तो इट हैज मोर देन वन एलिमेंट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सैंड। आई एम रेफरिंग टू दिस स्ट्रक्चर, ये हमने क्लास में भी पढ़ा था। ओके, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। व्हाट इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर NCl3? अब क्लास, इसके लिए हमें इसका दोबारा से स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कौन सा करेक्ट है। So then we will choose from the provided options. We all know that nitrogen, belongs to group number 5, and it has 5 valence electrons. Okay, 2 will go up. मैं भी क्रॉस से बनाता हूँ, क्योंकि इन्होंने क्रॉस से बनाया हुआ है ऑप्शंस प्रोवाइडेड में। तो आई विल बी यूजिंग क्रॉस फॉर नाइट्रोजन एटम। क्लोरीन के लिए हम डॉट यूज कर सकते हैं। ओके, अब हमें पता है कि क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड, तो इसलिए हम एक इधर कर लेते हैं, एक इधर कर लेते हैं। तो टोटल हमारे पास 5 है। क्लोरीन ओवरलैप करेगा ऐसे, लाइक दिस, तो दे विल बी 6 अनपेयर्ड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, लाइक दिस। अगेन द सेकंड क्लोरीन कम्स। अब हम थर्ड क्लोरीन बनाते हैं। So class, we have completed the cross and dot and cross diagram for NCl3। अब हम ऑप्शन में से देखते हैं कि कहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है। अब आप ये देखें कि इसमें जो लोन पेयर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। हमने लोन पेयर्स भी शो किए हैं, इसमें लोन पेयर शोन है, बट ये जो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिसिंग हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। आप अगर इसमें देखें तो क्या ये हमारे डॉट एंड प्रोसेसर मैच कर रहा है?
just take a few seconds and match with a dot and cross diagram. Yes, it is matching with our option. ऑप्शन डी को भी एक बार देख लें. ऑप्शन डी में ये है कि ना इसके लोन पेयर शोन है और ये मतलब इसके जो टू ये इलेक्ट्रॉन है ये भी नहीं शोन. तो ये मतलब दोनों ही वे से गलत है, तो ये भी गलत ऑप्शन है. वेयर एज सी इज द कंप्लीट डायग्राम, इट इज शोइंग द फुल डिटेल्स of the dot and cross diagram. So this is the correct option. So we will go for C, right? Okay, student. हम क्वेश्चन 10 पे आ गए. व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं हमें पता है. ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Sharing of electron kin atoms के between non-metallic elements. We already studied in the class. So okay, let's come towards option number B. Option A ठीक लग रही है, but still we have to look the other options as well. Electrons being shared by letters of positively charged ions. That's totally incorrect. ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता. ये मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग को तो नहीं रेफर कर रहा. शेयरिंग तो बता रहा है लेकिन लेटर्स पॉजिटिवली लेटर्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयंस में ये इनकरेक्ट है. एलिमेंट्स ऑप्शन नंबर सी, एलिमेंट्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव अ नोबल गैस स्ट्रक्चर. ये तो मेटल्स की बात कर रहा है. मेटल्स यूजुअली लूज करते हैं, तो ये तो गलत है. दैट इज इनकरेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर डी, oppositely charged particles strongly attract each other. This is referring to ionic bonds. ये भी, this is also incorrect. So option A is the correct option. We will go for A as this complies with the definition. I will circle for you option number A. Okay, question number 11. Which substance has a giant covalent structure at room temperature? Methane, तुम सबको पता है, एक सिंपलर मोलेकुलर स्ट्रक्चर है. सैंड एक जायंट मोलेकुलर स्ट्रक्चर है. जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, यस, वी ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. सोडियम क्लोराइड जो है वो एक जायंट लैटिस है, बट वो जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर नहीं है, इसका लैटिस होता है. तो वाटर की अगर हम बात करें, वाटर इज a simpler molecular structure. So out of the available options, sand is the correct answer as we already studied the lectures. Yes, sand has a giant molecular structure comprised of covalent bonds. Okay, now move towards question number 12. Okay, it's talking about ethane and methane are covalent bonds. So इसकी statements given है, हमने इनमें से ये check करने की correct कौन सी हैं. A molecule of ethane contains twice as many hydrogen atoms as a molecule of ammonia. So class अगर हम इसके given formula पे ही अगर हम देखें, ये काउंट अगर हम करें, ये देखें, ये इथेन है हमारे पास, ये है ये अमोनिया. तो इथेन में कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6. और अमोनिया में कितने हैं? 1 2 3. इसमें 6 हाइड्रोजन है और इसमें 3 है. सो ये मतलब कि ट्वाइस है. इथेन के पास ट्वाइस हाइड्रोजन है एज कम्पेयर टू अमोनिया. सो ऑप्शन अगर हम स्टेटमेंट नंबर 1 देखें, सो दिस इज अ ट्रू ऑप्शन, ये ठीक है. ऑप्शन नंबर 2 अगर देखें, एन अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एटम हैज 5 आउटर इलेक्ट्रॉन्स. यस, दिस इज ट्रू. नाइट्रोजन क्योंकि ग्रुप 5 में लाई करता है, सो इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 2 इज आल्सो करेक्ट. और ऑप्शन नंबर 3 अगर देखें, इन द मॉलिक्यूल ऑफ ईथेन the bond between the carbon atom is formed by sharing of 2 electrons, one from each carbon. If we draw its dot and cross diagram, class, इसका किस तरह का बनेगा? Let's draw it. ये देखें, इथेन में जैसे सिंगल बॉन्ड होता है, इस तरह का बनता है. The rest are the 3 electrons. और ये किसके साथ बॉन्ड करते हैं? हाइड्रोजन के साथ, like this.
अब मैं इसका आपके सामने कंप्लीट स्ट्रक्चर ही बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये आप देख सकते हैं जैसे स्टेटमेंट क्या कह रही है, बेसिकली द बॉन्ड बिटवीन कार्बोनेटेड फॉर्म इज फॉर्म बाय शेयरिंग टू इलेक्ट्रॉन्स। यस दिस इज ट्रू, ये देख लें। एक इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं इस कार्बन का आ रहा है, एक दूसरे कार्बन का आ रहा है। यस देयर इज शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, so this is correct. So statement number three is also correct. So which option has all the three statements? If you look at the provided options, so it is definitely option number A. So we will go for option number A. It shows that 1, 2, and 3 are the correct options. I will circle this option. Okay. Question number 13. Which row is correct? Has covalent bonding. As you already studied, कि दोनों में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ये जो पी है ये बेसिकली शो कर रहा है डायमंड को शो कर रहा है और वो ग्रेफाइट को कर रहा है। तो दोनों एलोट्रोप्स हमें पता है, दोनों में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो सी और डी में अगर देखें तो ये सी और डी ऑप्शन कुछ सही लग रही है। अब कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्ट सिर्फ ग्रेफाइट ही करता है बिकॉज इट हैज वन वैलेंस और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज फॉर ग्रेफाइट। ये स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में आपको एकदम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये हमने क्लास में बहुत दफा रिपीट किया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये डायमंड है और ये ग्रेफाइट है, ये डायमंड है। सो ग्रेफाइट ओनली कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, सो यस क्यू इज करेक्ट। सो क्यू ओनली कंडक्ट्स, सो ऑप्शन सी और डी में से अगर हम देखें तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ओनली क्यू कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ग्रेफाइट और दोनों में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। So this is the correct option, C and D. Okay, class, let's come to words. Question number 14, silicon 4 chloride. SiCl4 boils at 58 degrees. Acha, which row shows the type of change when silicon 4 chloride boils and exclination? अच्छा क्लास, ये बॉइलिंग एक प्रोसेस है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ये केमिकल प्रोसेस नहीं होता, एक फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि ये रिवर्सिबल है, ये वापस भी आ सकता है। इट इज नॉट इरिवर्सिबल। तो ऑप्शन ओनली सी एंड डी सीम्स टू बी करेक्ट बिकॉज इट इज अ फिजिकल चेंज। अब सी और डी में से अगर हमने शॉर्ट लिस्ट करना है तो होता क्या बॉइलिंग में, ये हमें पता है कि फेज चेंज होती है, वो मतलब गैस कन्वर्ट होता है। बेसिकली इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ब्रेक होती हैं। देयर इज नो चेंज विद द कोवलेंट बॉन्ड्स, सिर्फ वो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस वीक होती जाती हैं। तो अगर हम देखें तो सी ऑप्शन करेक्ट है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। There is no change on the covalent bonds on boiling. Okay, question number 15. Which molecule has only 4 electrons involved in covalent bonds? अब क्लास 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि इसमें आपने एकदम ये हिंट क्विकली आपने साइड करना है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने पेयर्स बनेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके बनेंगे 2। दे विल बी 2 बॉन्डेड पेयर्स। अब 2 बॉन्डेड पेयर्स क्लास किन में होते हैं? क्लोरीन में हमें जैसे ऑलरेडी पता है। आई वोंट ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस अगेन बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और स्टूडेंट्स एमसी में आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम होता है, 1 मिनट एंड अ फ्यू सेकेंड्स। तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ड्रॉइंग द ऑल द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स। अगर आप प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं बेशक कर सकते हैं, लेकिन क्लोरीन में आपको पता है कि होता है 1 बॉन्डेड पेयर होता है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन। कार्बन डाइऑक्साइड में भी अगर आप देखें 2 ऑक्सीजन एटम्स कोवलेंटली बॉन्ड करते हैं कार्बन के अराउंड। ऑक्सीजन मतलब 2 बनाते हैं, तो देर आर 2 and 2, यू कुड से 8 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। H2S, yes, H2S is correct because sulfur has 6 electrons। इसका मैं आपको बना के दिखा देता हूँ जल्दी से। ये देखें, सल्फर के पास 6 होते हैं। एक हाइड्रोजन मतलब आ सकता है ऐसे।
तो ये मतलब टू बॉन्डेड पेयर्स यानी फोर इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसके साथ बॉन्ड कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बल्कि है ही करेक्ट है ये। यस, H2S इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ट्रिपल का मतलब है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। मैं नंबर्स भी लिख देता हूँ, आप खुद इसको सेपरेटली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसमें 8 इन्वॉल्व हैं। और इसमें देखें इसमें 2 इन्वॉल्व हैं। तो 4 सिर्फ यही ऑप्शन है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, class. Let's come towards question number 16. Four statements about diamond, graphite and silicon oxide are listed. अब हमने इनमें से सिलेक्ट करनी जो कि करेक्ट है। Diamond and silicon oxide are both very hard and have similar structures. Yes, this is a true statement. अब क्लास हमने ये पढ़ा हुआ है अपने लेक्चर्स में भी कि डायमंड हैज अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, और सिलिकॉन ऑक्साइड में भी ऐसे ही होता है। Okay, both have tetrahedral arrangement and they're quite hard and they both have giant structures. So yes, statement one is correct. I will put a tick before statement number one. If you look at statement number two, in diamond each carbon atom is joined to four other carbon atoms. Yes, this is true. ये फिर उसकी tetrahedral arrangement की बात हो रही है. That is also correct. Statement number three. Silicon oxide forms a giant structure of silicon and oxygen atoms. Yes, this is definitely true because sand forms a giant structure and it is mainly comprised of the network of silicon oxide. So this is correct, absolutely correct. If we look at statement number four, इसको अगर हम देखें, diamond and graphite both conduct electricity because they're both forms of carbon. This is incorrect, ये गलत है। Because graphite के पास आपको जैसे क्लास में पढ़ाया गया था एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, whereas diamond has all the electron fixed in its covalent bonding. So diamond doesn't conduct electricity, whereas graphite does. So this is the incorrect statement. So which option has 1, 2, 3 as the correct option? Yes, it's A. So we will, just circle option number A. और अगर हम बाकी options में देखें four तो है ही totally incorrect. So we will eliminate all the other options that are having four. So these are all the incorrect options. We are only left with A, which has 1, 2 and 3. और ये वैसे भी correct हैं अगर हम logically भी देखें. Okay, let's come towards question number 17. Which molecule has the largest number of electrons involved in covalent bonds? Okay, class, this is a bit challenging question. अब इसके लिए आपको quickly अगर आप mind में इसकी बना दे dot and cross, या अगर आप just within 2 minutes, इसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। बट एनीवेज आई कैन मेक दिस क्वेश्चन इजियर फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसके डॉट एंड क्रॉस बनाने और आपने चेक करना है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बट आपको आना चाहिए। ये देखें, C2H4। अब ये देखें C2H4, अब इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। आई एम डूइंग दिस पार्ट फॉर यू। अब बाकी कितने रह गए, 2। मैं सबके बनाऊंगा स्ट्रक्चर, फिर हम इसको देखेंगे किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओके,
अब हम CO2 का भी बनाते हैं। ओके, अब हमारे पास किसका रह गया? मैथनॉल का रह गया। हम इसको भी बनाते हैं, इसका जरा थोड़ा बड़ा सा होगा, इसको भी ट्राई करते हैं। 3 हाइड्रोजन इसके साथ आएंगे, जैसे अब एज यू कैन लुक फ्रॉम द फॉर्मूला। ऑक्सीजन में देखें आप। अब नाइट्रोजन का रह गया। नाउ वी विल काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें क्लास अगर आप देखें, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। मैं यहाँ 6 लिख लेता हूँ। इसमें अगर हम काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 10 12 इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ये 4 ये कार्बन के अपने, और बाकी अगर हम देखें 8 8 प्लस 4, यस 12 इलेक्ट्रॉन्स, यस। और CO2 में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 4 ये और 4 ये, तो 8 ये है। और अगर हम इसमें देखें कितने बनते हैं, 2 ये 3, अगर आप ये देखें 3 हाइड्रोजन एटम्स के, तो ये 6 ये हैं, और 2 ये हैं, तो 8 हो गए। 8 + 2 10, इसके 10 है, मैथनॉल के 10 है। और नाइट्रोजन में हमें पता 6 हैं। मैं बस इसके आगे इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूँ कितने इन्वॉल्व हैं। इसके आगे 6 हैं, इसके आगे 10 है, और CO2 में 8, और इसमें कितने हैं, 12 है। So now read the question. Which molecule has the largest number of electrons involved in covalent bond? Yes, it is A. A is the correct option. Question number 18. A molecule of tetrafluorosilane is shown in a dot and cross diagram. Only the outer shell electrons are shown. Which statement is correct? अगर हम इसको देखें, each molecule of SiF4 has exactly 4 pairs of electrons. This is incorrect. अब इसके पास अगर हम देखें, it has 4 pairs of electron, not 16 pairs of electrons. This is totally incorrect. In If we look at the option number B, SiF4, both the silicon and the fluorine have the same electronic configuration as neon. Neon की अगर देखें तो no, this is incorrect. इसकी तो बल्कि अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्योंकि सिलिकॉन, हम periodic table चेक करते हैं एक दफा दोबारा। सिलिकॉन किस में आता है? यस, दिस इज सिलिकॉन। तो silicon will have the electronic configuration of argon, whereas fluorine will have the electronic configuration of neon.
बिकॉज क्योंकि आप देखें फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगी तो वो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करेगी, जबकि सिलिकॉन जो है वो करेगा आर्गॉन की चीज। दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट। दोनों मतलब एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन मतलब सेम नहीं होगी, आर्गॉन की बल्कि सिलिकॉन की होगी अगर हम क्वेश्चन को देखें। दिस इज इनकरेक्ट। Molten SiF4 will conduct electricity. Remember, students, Si only the ionic compounds in molten state will conduct electricity. Covalent compounds neither in ionic nor in aqueous. Aqueous तो होता ही नहीं है बल्कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते, और SiF4 एक नहीं करता, मोल्टन फॉर्म में तो नहीं बिल्कुल करेगा। दिस इज इनकरेक्ट। दिस इज ओनली ट्रू फॉर आयनिक कंपाउंड्स, और ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, SiF4 has a low melting point. Yes, this is true because it is a simpler molecular structure. Remember, students, हमने क्लास में भी पढ़ा था, all the simpler molecular structures have low melting point. So yes, option number D is correct because it is a simpler molecular structure. Okay, let's come towards question number 19. Which arrangement of the bonds are same? अब हमें इसके लिए statements पढ़नी पड़ेंगी। X is the arrangement of bonds around the carbon atom in graphite. Okay. Y is the arrangement of bonds around carbon atom in diamond. Z is the arrangement of bonds around silicon atom in silicon 4 oxide SiO2. अब किसमें arrangement same होती है? अब ग्रेफाइट और डायमंड में तो हमें पता है कि डायमंड हैज हेक्सागोनल अरेंजमेंट। आई कैन ड्रॉ इट फॉर यू। इस तरह की होती है। डायमंड में हमें पता है टेट्राहेड्रल होती है, ऐसे 4 एटम्स। और सिलिकॉन में बस वो एटम्स डिफरेंट होते हैं, अरेंजमेंट सम सिमिलर ही होती हैं। सो विच अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स आर द सेम? तो अगर हम देखें तो वाई हमारे पास है डायमंड, और जी हमारे पास है SiO2. Yes, Y and Z are correct. So we will go for option number C. Option C is correct. This is the correct option. ग्रेफाइट का तो हमें पता ही है, जैसे हमने क्लास में भी पढ़ा है। Okay, moving on towards the last question. Boron trifluoride is a simple molecule. There are 3 covalent bonds in each BF3 molecule. Each of these bond is made by sharing 1 electron from. अभी information class provided है, आप question खुद भी पढ़ सकते हैं। अब ये किस तरह मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये मैं आपको बना के इसका दिखाता हूँ। ये देखें आप। Since you know that boron lies in group number 3, it will have 3 electrons. ये देखें, it is forming a covalent bond with fluorine atom. ये देखें, अब फ्लोरीन के पास हमें पता है 7 होते हैं। I will do the same for the other fluorine atom as well. Okay, ये हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। Now we have to find what is the unusual about the bonding in boron trifluoride. It is unusual for non-metals such as fluorine to form covalent bonds. No, this is correct. This is not an unusual thing. Mostly non-metal atoms form covalent bonds. So this is an incorrect option for this question. This is not an unusual thing. Option number B. The boron atom in each molecule does not gain the electronic configuration of a noble gas. Yes, this is correct because it is having 6
electrons after sharing of electrons from fluorine. अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें इसकी कितनी बन रही है आफ्टर शेयरिंग, अब इसकी देखें क्लास नियॉन जितनी नहीं बन रही, नियॉन की है 10, अब बोरॉन का क्या नंबर है 5 है, इसके फर्स्ट शेल में कितना होगा 2, 2 और 6 8, तो ये 10 नियॉन का क्या है 10, इसका कितना बन रहा है 8, दिस इज नॉट अचीविंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अ नोबल गैस, जो इसकी नियरेस्ट नोबल गैस है वो है नियॉन, तो उसकी वो अचीव नहीं कर रहा, तो यस दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, दिस इज the unusual thing that is about BF3. And if you look at option number C, the covalent bonds do not consist of shared pair of electrons. No, this is incorrect. Covalent bonds, yes, have shared pair of electrons. This is an incorrect option according to it. और covalent bonds में electrons होते ही sharing से हैं. So if you look at option number D, the fluorine atoms in each molecule do not gain the electronic configuration of a noble gas. No, they do achieve. फ्लोरीन जो है अगर हम देखें एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो फ्लोरीन नियॉन की कन्फिग्रेशन अचीव करते हैं बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे देखें इसकी 9 है इसकी 10 है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली वो शेयर कर रहे हैं बोरॉन से, तो वो मतलब नियॉन की अचीव कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी क्या कह रही है, they do not gain the electronic configuration of a noble gas. Yes, they are doing. So this is also an incorrect option. So the correct option is B. B is the correct option, that boron do not gain the electronic configuration of a noble gas. Yes, this is correct option. So students, we have finally completed the worksheet. I hope all of you have completely understood all the questions. So if you have any queries, feel free to ask. And okay, Allah Hafiz, signing off. Take care.